for you. The world stops spinning. My head is spinning too. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिनव डोगरा एंड वेलकम टू शानदार इंडिया. Before we start this amazing travel vlog to the hills and the lake, let me thank all of you subscribers for an overwhelming response on the last vlog, which was a house party at the Pandays. We have crossed 12,000 views on that. Plus, in addition to this, अगर आपने हमारा weight loss वाला vlog नहीं देखा है, please do watch it. You can lose a lot of weight just watching that vlog. So today we are going to take you to a very beautiful place in Himachal. This district is called Lahaul and Spiti. Lahaul and Spiti are different districts but they are called together. Lahaul का जो major शहर है वो है Kelong and for Spiti is Kaza. So first I will take you to a beautiful city in Spiti जिसका नाम है Kaza. And from Kaza, I will take you to a wonderful lake on 14,000 feet in the Lahaul district. Some interesting facts about this vlog will be Chandatal Lake, which is a declared international wetland site. ये कुछ ही साइट्स होती हैं पूरे वर्ल्ड में. सेकेंड, आई वुड बी टेकिंग यू टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस एंड आई विल बी टेलिंग यू कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप कहां पे है. सो टू वॉच ऑल ऑफ दिस, लेट्स रश टू द ब्लॉग. By air, you can take a flight to Bhuntar Airport or the Kullu Airport, and from there you can take a cab which will cost you around 8 to 10,000 rupees. The cab will take you via Manali to Kaza. Roads are really bad, तो भले आपको Google Maps 6 hours दिखाए, but it will be 2 hours more. The moment you leave Manali Leh highway, roads go really bad. Distance of Kaza from Bhuntar Airport would be around 235 kilometers. By road, option number 1, from Delhi to Kaza you have to go by via Manali. This distance would be around 713 kilometers and time taken as per Google would be around 16 hours, but मान के चलिए 18 से 20 घंटे आपको लगेंगे ही लगेंगे. सेकेंडली, अगर आप बाय रोड जा रहे हैं अपनी गाड़ी से तो ठीक है. अगर आप बस से जा रहे हैं, सो फ्रॉम दिल्ली इट विल कॉस्ट यू टिल काजा 1400 to 1500 रुपीज पर पर्सन. इफ यू वांट टू कम बाय ट्रेन देन यू कैन टेक द ट्रेन टू चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ से पास है हिमाचल. चंडीगढ़ पहुंच के यू कैन टेक अ कैब और अ बस एंड देन गो अपवर्ड्स टुवर्ड काजा इन हिमाचल. अगर आप समर्स में जा रहे हैं, सो दिस इज द रूट यू कैन यूज. बट इफ यू आर गोइंग इन विंटर्स then this route gets closed in winters. You have to use another option which I'll just tell you. Winters में इस रूट पे 6-6, 7-7 फुट बर्फ गिर जाती है and hence the road gets completely closed. By road, option number 2, from Delhi to Kaza via Shimla and Nako. ये रूट समर्स और विंटर्स दोनों में खुला रहता है. The only thing is this route is little longer. It is 763 kilometers और यहाँ से आपको पहुँचने के लिए फ्रॉम दिल्ली टू काजा लगेंगे 21 to 22 hours. सो टाइम भी ज़्यादा लग रहा है एंड डिस्टेंस भी ज़्यादा है. द ओनली थिंग इज़ यू कैन यूज़ दिस रूट इन विंटर्स एज वेल. सो माई प्रेफरेंसेज, अगर आप समर्स में जा रहे हैं, प्लीज़ यूज़ द मनाली रूट. इट इज़ शॉर्टर एंड इट इज़ बेटर. Hotel Desor. If you want to stay in a hotel, this would be my first choice. It has beautifully decorated rooms with handicrafts and writings on the wall. This is the only hotel on 13,000 feet in Kaza which can give you amenities like Wi-Fi, satellite TV, garden cafe, meditation room, and even they sell souvenirs. Lovely hospitality by the owners Kim and Karan. Their room tariffs start at 1,500 rupees a day a room to 5,000 rupees. Depends on the type of room you select, based on the type of view you want. The Sakya Monastery or the Tangyun Monastery is right when you enter Kaza. It is a big monastery with beautiful Tibetan art on the pillars. Here you can see how the monks stay, pray and even educate in the monastery school. You can sit, meditate as well as understand कैसे मॉन्क्स अपना कल्चर और अपनी लाइफ कैरी करते हैं.
In the Kaza market, Grompos is the shop where you will find some unique souvenirs from pendants to woolen clothes to artifacts to musical bowls. I think that's the best place for you to shop in. Soul Cafe is a very cool and cozy cafe right in the middle of mountains in the Kaza market. This cafe serves yummy sandwiches, cold coffee, shakes, and along with that it has juices and jams of sea buckthorn. Sea buckthorn is a wild berry found in Spiti. This wild berry has many medicine values, and along with that it's a great antioxidant and a good acclimatizer. When you are on a height of 13,000-14,000 feet, it helps you acclimatizing with that high altitude. की मोनेस्ट्री, इसको तो आपने फोटोज में देखा ही होगा, बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है क्योंकि एक प्लेटो लाइक हिल पे बना है. दिस मोनेस्ट्री इज ओवर 900 ईयर्स ओल्ड. आज भी उस समय की राइटिंग्स, स्क्रिप्टिंग्स, बुद्धा जी के पिक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं. दिस इज अ मोनेस्ट्री विच हैज़ अगेन अ स्कूल. यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है. मॉन्क्स आर रियली गुड, सो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस. And this is how Kaza looks in winters. Travelers who like to stretch themselves to see the other beautiful side of nature. Kunfun Homestay is the best homestay अगर आप homestay में रहना चाहते हैं. That also gives you amazing view of snow-covered mountains during the winters. Besides the hotels, यहाँ पे homestays बहुत common हैं. Locals to earn money, they have converted their houses to homestays. They provide very good homely food and good view. Room tariff of a room at Kunfun Homestay would be around 1500 to 2000 rupees. They provide rooms for 4 occupancy, double occupancy, and let me tell you, the food is really amazing in this homestay. Let me take you some places nearby Kaza. You can travel by cab, you can rent a bike as well. And the major attraction is the world's highest restaurant as well as world's highest post office. Even the Indian Oil petrol pump at Kaza is the world's highest petrol pump, situated on an altitude of 13,000 feet. So all the more आपके पास इतने सारे interesting facts and reasons हैं to visit this place. So many of you would be thinking, what is the right time to go to these places? So the right time to go to Kaza or to Chandratal is from May to October. समझ में ही जाइए, आपको सड़कें खुली मिलेंगी. बट अगर आप विंटर्स में जाना चाहते हैं, लेट मी टेल यू कि ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पानी तो फ्रोजन हो ही जाता है because of the temperatures, but साथ ही साथ आपका टूथपेस्ट भी जम जाएगा. So the people who are snow enthusiasts, जिनको चारों तरफ स्नो ही स्नो, covered mountains, covered city चाहिए, then you can try in winters. Elsewise go in summers. Let me also tell you, in Kaza जितने भी cafes है, restaurants है, काफी चीजें बंद रहती हैं because temperatures go as low as -15, -16. So you can take your call when to go. So let me take you from Kaza to our last destination, Chandratal Lake. I must say it is a beautiful lake created by God. Roads are again bumpy with deserted mountains. Here when you travel from Kaza to Chandratal, it will take you around 2 hours. Distance is 80 kilometers with beautiful Spiti river flowing right next to you. And you will cross Kebba village and Kunzum La or the Kunzum Pass. ये है कुंजुम पास, जहाँ पे है कुंजुम माता का मंदिर. कहा जाता है कि अगर आप इस रूट से चंद्रताल जा रहे हैं तो आपको माता के दर्शन करे बिना आगे नहीं जाना चाहिए. यहाँ पे एक पत्थर भी है, जिस पत्थर पे कॉइन चिपका के अगर आप कोई विश मांगे तो कहा जाता है आपकी वो विश पूरी हो जाती है.
Finally, we reach the campsite. The moment you enter Chandratal, the first camp is Moon Lake Camps. These camps have luxurious Swiss tents where you will get a proper wooden bed with really warm quilts and blankets. These tents are very well sealed, तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी. Plus they have a basin and a proper western toilet. Along with this, they have a huge tent for dining area जहाँ पे आपको गरम गरम खाना सर्व होगा. The tariff of this tent would start from 1000 rupees and go to 2000 rupees a day, depends on the season timing. Now on 14,000 feet अगर आपको इतनी amenities और इतनी सहूलियतें मिल रही हैं, I think it's next to impossible. Since Chandratal Lake is marked as a international wetland site, you cannot camp at Chandratal Lake. Campsites are 1 kilometer away, hence you have to walk. Chandratal Lake is surrounded by hundreds of beautiful varieties of flowers. This lake is home to some rare species of animals which can survive in this altitude as well as cold temperature, like snow leopards, golden eagle, red fox and blue sheep and many more. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me why it is. This lake can also be reached by a trek from Kunzung Pass, which will be around 8 kilometers in 2 hours. This lake is on such a height that it is also known as So Chikma, that means the lake of the moon. Here, the moonrise and the moonset in the night looks very beautiful since the lake is on a pretty good height. रात का नज़ारा यहाँ का बहुत ही खूबसूरत होता है. ऐसा लगेगा जैसे कि तारे आपके सर के जस्ट ऊपर हैं और आप अपना हाथ बढ़ा के तारों को तोड़ सकते हैं. ट्रस्ट मी, ऐसा खूबसूरत नज़ारा आपको ज़िंदगी में कहीं देखने को नहीं मिलेगा. You can move back from Chandratal to Manali. This is around 110 kilometers and it will take you 4 hours. रास्ते में पड़ेगा आपको बातल. बातल में चाचा चाची ढाबा में ज़रूर खाइएगा. You will get some lovely Maggi, momos and दाल चावल. The unique part here is that इस ढाबे के ओनर्स ने कई बार रफ वेदर, रफ कंडीशंस में कई लोगों को बचाया भी है, इसलिए उनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं. Staying up when I go out. You gotta know I'm all yours. आई होप आपको हमारा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा. इतनी अच्छी वादियों में तो किसी को भी जाना अच्छा लगेगा. एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, जस्ट कमेंट बिलो द व्लॉग. एंड इफ यू लाइक आवर व्लॉग्स, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन नीचे ही है, दबा दीजिए. सो कीप वॉचिंग आवर लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल व्लॉग्स एवरी संडे. सी यू. Bye bye. Sayonara. Take care.